enjoying sessions offline Yes, sir, online very much. offline चालू हो गया ना तुम्हारा भी? Sir. Good. Okay, now page number 122, students. I wanted to solve the second question and the third question, students. I want to solve these two questions right now. These are based on the launching of rocket, students. Okay, try to get the answer. Students, hope you have the module in front of you. If you want, I'll read the question for your students. A rocket is moving vertically upwards against gravity. Its mass at time t is given as. Okay, so I'm speaking about the second question, students. Its mass at time t is given as m0 minus mu into t, students. Okay, and it expels, and this is at time t. Okay, it exhales burn fuel at a speed of. So the fuel is burned. So the exhaust we consider. Okay, the burnt fuel is given, and it gives a speed u vertically downwards relative to the rocket. So students, the relative velocity of the exhaust with respect to the rocket is VR, students. Always we represent VR. And that is represented over here as u, and that all the time remains constant, students. Hope you understand this thing very clearly. And it expels a burnt fuel at the speed u vertically downwards related to the rocket. Question kya pucha hai? Derive the equation of motion of the rocket. You simply have to get the equation of motion of the rocket, students. Okay. Your mu is constant. Students, you need to go for the equation of motion of the rocket. If in case if you want, I need to get the relation for acceleration possessed by the rocket. That's all. Equation of motion. Students, is the question clear to all of y'all? Page number 122, question number 2. Yes, sir. Yes, Anaita, come on, answer. My luck, Anaita, you're very scary. The wall times will trample every inch of the world beyond this island. Ha, ha. Don't laugh, Anaita. Anaita is fond of Ramsey movies, just seems like that. Some horror movies. You? Yes, anybody? Okay, she loves watching anime. Okay, fine. Since what's the question asked us? Derive the equation of motion of rocket. No need to solve it. Friends, when I speak about equation of motion of rocket, that means the rocket is propelling in the upward direction. तो ये किसकी वजह से है? अपथ्रस्ट की वजह से है ना? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है सर? रॉकेट का फोर्स एक्ट हो रहा है. Since it's launching upwards, so can I say upthrust is greater than the weight of the body? So upthrust minus weight of the rocket will cause the rocket of mass m to move with an acceleration a. बस ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया. तुम्हें acceleration का फॉर्मूला चाहिए. स्टूडेंट्स, ये वाला हम लोग ने किया है कि नहीं किया है? हाँ स्टूडेंट्स, और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, अगर तुम्हें मालूम है?
Upthrust is actually what? So it's a relative velocity of the exhaust with respect to the rocket into dm by dt, है ना? It's the rate at which the gas is getting ejected, we consider. So dm by dt minus mg is equal to m into a, and that's the initial mass we consider, total mass we consider. बस तुम्हें ए का फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तुम्हें दिया क्या है, m is equal to m0 minus mu into t. Students, अगर ये expression को मैं differentiate करता हूँ, students, if I differentiate this expression with respect to time, so students, what exactly dm by dt will be? Students, differentiate करो. So differentiating m0 minus mu into t by dt. So students, m0 is a constant terms cannot be differentiated. Minus n बार आएगा. Mu क्या है? Constant दिया है. dt upon dt will be answer. What's answer? Minus mu. So what is the value of dm by dt, students? Minus mu. Can I substitute this back over here? Yes. What is the relative velocity? So that is given to you as u. Minus dm by dt is minus mu. So can I say simply mu आ जाएगा? Minus, agreed, m g divided by m, and that is equal to a. I want to find out equation. So what exactly my final answer will be? A equal to ये m तो cancel हो जाएगा. U into mu. What is small m? M0 minus mu into t minus g. And that becomes your final answer. क्या ये clear हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Students, all of you all hope you're getting it. Question पूछा था, find out the equation of motion. Students, अगर equation of motion पूछा है, अगर तुम read करोगे, okay, so find the equation of motion. Equation of motion का मतलब it's v is equal to u plus at, s is equal to u plus half at square, v square is equal to u square plus 2. It's a linear motion. तो मैंने कौन सा equation लिया? v is equal to u plus at. तो a is equal to what? v minus m. I'm trying to find out acceleration. How do I get acceleration over here, students? Since it's in motion, my upthrust has to be greater than the weight of the body. Agreed? तो अपथ्रस्ट को मैंने ले लिया, br को मैंने u ले लिया, dm by dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करके माइनस म्यू डाल दिया यहाँ पे, m को डिवाइड कर दिया. चाहो से. Yes, students, can I erase it? हाँ students, erase कर दो. Yes, sir. No, sir. Who said it? No. Sir, I said it. और नेहा. Fine. जिसने second question समझ में आया, students, please go ahead with the third one. Try to crack the third one by yourself. Come on fast. Sir, done. Very good, नेहा. Sir, the board. क्या बोल रहे हो? So noting down then from the board. अच्छा, नो अभी भी लिख रहे हो अभी भी? हाँ सर, अभी Okay, हो गया. नेहा पीयू क्या आंसर देती है मालूम है? एकदम स्मार्ट हो गई है वो अभी ऑफलाइन सेशंस में. देखना चाहिए वो. खुशहाली बहुत आंसर्स देते हैं. सर आप क्या मजाक कर रहे हो? हाँ. क्या बोल रहे हो इज़हार? कुछ नहीं. अरे सच में तू तू उस बैच में थोड़ी है, तू जेई बैच में थोड़ी है, जेई और मेडिकल बैच में थोड़ी है, तू तो एडवांस बैच में है ना. हाँ तो तेरे को कहाँ से खबर मिलती है पूरी? तू आके सर, बैठ वहाँ पे. मुझे लग जाती है खबर. अरे क्या आंसर्स देते हैं पीयू और खुशहाली और बाकी जो स्टूडेंट्स है. माय गॉड, यू वोंट बिलीव इट. वो टॉपर को भी पीछे कर देते हैं. सर इनडाइजेस्टेबल लग रही है बातें. नहीं सच्ची में. तेरे को ये मत समझ कि मजाक है, ये फैक्ट है. ये सारे खारकर स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ.
हो गया नेहा, मीटिंग फॉर यू नेहा, Yes, sir. हो गया हाँ सर. तो बोलो ना। सर सॉल्व करके नहीं हुआ. हाँ सॉल्व करके नहीं हुआ. नहीं, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं इसके लिए वेट कर रहा था इरेज करने के लिए। तो ये वो हो मैंने गया। बोला ना सर आपको कि डन करके. हे भगवान, मैंने ऐसा मत बोलो यार, सुना ही नहीं मैंने। ऐसा क्या कर रही है तू नेहा? थर्ड वन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? पेज नंबर 122, थर्ड वन। ये निखिल कौन है मेरा रोड में? सर मेरे पीछे ही बैठा था। अच्छा, ये बताना ही निखिल कौन है इधर। हाँ क्वेश्चन सर। पूछो, इसमें नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a rocket of initial mass is m0. Students, this is the third question. Students, question number 3 is given to you as rocket का initial mass is given to students m0. Students, its initial mass is m0 students, okay, and has a mass m0 at time t, means initially at time t equal to 0 seconds students, and now it has a mass m0 into bracket 1 minus t by 3, okay, at t seconds. The rocket is launched from rest. Initial velocity क्या है? 0 meter per second. Time 0 seconds. Mass is m0. Vertically upwards under gravity and expels burn fuel. Students, it expels a burn fuel at a speed of u related rocket. And the relative velocity of the gas with respect to rocket is u, and that remains constant. Students, ये दिया हुआ है, okay. Downwards. Find the speed of the rocket. पूछा है v of the rocket. Okay. At t equal to 1 second. 1 second के बाद में what's the velocity? Students, anybody get it? Find the velocity at the end of 1 second. Anyone? Conveer, Rushika, Nikhil, Ayushman, Aisha, Arif. Sir, that formula VR Which is equals to ln m naught upon m minus gt. आप पढ़ाते तो कितने इंटेलिजेंट हो गए ये देखा है यार. Students, the formula is v is equal to v is equal to what exactly the formula we considered is equal to relative velocity minus g into t. Students, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, Yes, sir. minus g into पीछे लिखो, यहाँ पे लिखो, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी होगा u, okay, minus gt plus v into r ln होगा, और ln में क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, the total mass initially we consider to the mass when the fuel is consumed. ये तुम्हारा फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes, sir. Now look over here, what is the initial velocity when the body starts with the initial velocity कितना है? 0 meter per second. End time t कितना है? 1 second. vr क्या होगा? u. Agreed. तो now कहने से v is equal to, ये तो 0 होगा, minus g into 1 plus u into ln. ये क्या है? m0 upon m की जगह पे स्टूडेंट्स, instead of m can I put this? Yes, the mass after time t is m0 into bracket 1 minus t by 3. Agreed. तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मैं इसको t रखता हूँ स्टूडेंट्स. ये वापस मैं लिखता हूँ सेम एक्सप्रेशन आई एम ट्राइंग टू पुट इट स्टूडेंट्स.
लेकिन अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अभी. नाउ आई ट्राई टू गो फॉर इट. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 होगा, माइनस g इंटू टी इज 1 सेकेंड, प्लस ये तुम्हारा vr था. vr को मैं क्या लिख रहा हूँ, u m0 will get cancel, ln of 1 upon 1 minus 1 by 3. What is the time given to us? 1 second. Now can you solve what is 1 minus 1 by 3? 1 minus 1 by 3 will be 2 by 3. So that is 3 by 2. So can I say v is equal to minus g plus u ln of 3 by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. अच्छा सर मैंने अगर आपको इसको यही भेजा था. हाँ सर मैंने आपको ये भेजा था. मैंने देखा ही नहीं मेरे भाई, शायद मैंने शुरू किया उसके बाद में तूने भेजा होगा. क्या बात है वीर, वेरी गुड, सच अ स्मार्ट बॉय यू आर फ्रॉम खारगर. स्टूडेंट्स हैज गिवन अ करेक्ट आंसर. तू कहाँ था इतने सालों तक वीर? स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसने जी को -10 डाल दिया. वीर मुझे बताओ ये ln में लिखा है ना, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मुझे इसको नेचुरल लॉगरिथम में चाहिए टू द बेस ऑफ 10, तो कैसे करोगे? सर 2.303 इंटू लॉग. वेरी गुड, प्लस यू, ये हो जाएगा इंटू 2.303 log of 1.5 to the base of 10, है ना? यस सर. और सिर्फ तुम्हें log of 1.5 नेचुरल लॉगरिथम में देखना है, उसको 2.303. अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी सपोज, अगर तुम्हें कांस्टेंट स्पीड अगर u दिया है तो उसको डाल दो, तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. ओके, क्या मैं इसको इरेज कर दूं अभी? Yes, sir. Okay. Now, students, let us go for page number 124. On page number 124, students, there are simple questions related to law of conservation of linear momentum, students. Okay, page number 124, introductory exercise. Students, I want to solve question number 1, question number 2, question number 3 right now. On your mark, get set, go. Page number 124. सर आपने क्या बोला? 124 में क्या करना है? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 1 2 3. अरे मैंने बोला भजन करना है, कीर्तन करना है. हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण. सर हाँ बोलो पियो, क्या हो गया? कितने टीचर्स तुम्हें सिखाते सिखाते गाना गाना शुरू कर देते हैं? nobody, sir. That's why we Sir. like you ना. Nobody. अरे लेकिन मैंने तो सुना एसपीएम से भी गाना गाते हैं. सौरभ प्रियदर्शनी, तुम लोग को लेते हैं एसपीएम से मैथ्स? सर हमारा बायो है ना. So we are अच्छा, medical students. ओके, एसपीएम से वो भी गाना गाते हैं. कभी कभार बीच बीच में उनको एकदम अचानक ऐसा हो जाता है करके, क्या मुझे भी थोड़ा सा झटका चढ़ जाता है ऐसा. और डुअल पर्सनालिटी, कभी सीरियस रहता है, कभी सीरियस होता हूँ, कभी मजाक में होता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स. Okay, anyone students? So first question I'm speaking about, students. A particle of mass 1 kilogram is projected from the ground at an angle of 60 degrees with the horizontal. Oh, it's a projectile motion. Everybody should know it. Students, you are too good in your projectile. Students, यानी ये first question है, page number 124. The body is projected, students, at an angle theta with the horizontal, students. Okay. Students, a particle of mass 1 kilogram. Particle of mass is how much? 1 kilogram. Okay, is projected from the ground at an angle of 60 degrees. At an angle of 60 degrees with horizontally 60 degrees with the horizontal at a velocity of 20 meters per second.
तो u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये सर चाहिए स्टूडेंट। एक्सेलरेशन का ही मैग्नीट्यूड होगा ना? हाँ कुछ नहीं। नहीं मेरे भाई, मुझे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिलेगी ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये u है तो यहाँ पे ux होगा, ये uy होगा, ux क्या होगा u cos थीटा i कैप, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा j कैप। एक सेकंड के बाद में सोचो कि अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया एक सेकंड के बाद में, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो इसको भी तो तुम vx में लिखोगे और vy में लिखोगे, हाँ या ना? भूल गए प्रोजेक्टाइल? ऐसा याद है, याद है, याद है। ऐसा 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 मत करो, पेज 124 पे है तो ये देखो, ये भी थीटा तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होगा, हाँ या ना? वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा आफ्टर 1 सेकेंड। वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? वी वाई v is equal to u plus at, velocity along y axis uy minus g into t। चलो सॉल्व करो, मैं ही कर रहा हूँ सॉल्व, तुम लोग नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, मुझे सॉल्व करवाने के लिए लगा दिया। वाह रे वाह स्टूडेंट्स, एक सेकंड के बाद में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। पूछा क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस से इनिशियल करो, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी डायरेक्शन को लेना नहीं है, वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मास 1 किलोग्राम दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया है, एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज द हॉरिजॉन्टल, एंड हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द क्लास? लेट्स सी, whether it's Farhan, Akshat, Anita, Arif, Aisha, Aishman, Nazar, Vishali, Neha, Nikhil, Theo, Rishika, V. Anybody? Somebody? At least one body. Is it nobody? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? हाँ बोलो। सर आंसर 10 है क्या? क्या बात है, कौन है यो? क्या बात है, एकदम इंटेलिजेंट हो गया तू। ऑफलाइन सेशन शुरू हुआ नहीं कि तू एकदम इंटेलिजेंट हो गया, वेरी गुड। देखा देखा स्टूडेंट्स, इज़हार बोला था कि नहीं बोला था? देख No, इनिशियल, sir, but I did half only. देखो ux क्या है, तो तुम बोलोगे सर u cos थीटा i कैप, uy क्या है u sin थीटा j कैप, है ना? दिस आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा सर? फाइनल वेलोसिटी vx प्लस vy होगा, आया है ना वेक्टर फॉर्म में, है ना? ये v इज इक्वल टू vx प्लस vy। हाँ स्टूडेंट्स, vy कैसे निकालोगे? vy कैसे निकालोगे सर? vy इन वेक्टर फॉर्म अगर तो uy, व्हाट इज uy? u sin थीटा i कैप, एग्रीड, यस सर। माइनस
G. Agreed. In time, Yes. how much? 1 second. Along J cap. Sorry, ये भी J cap है, I cap नहीं, ये J cap है. Agreed. हाँ Fill up सर। final यस velocity. सर। What is the Sir. initial velocity? हाँ बोलो. 10√3 - 10 आ रहा है। नहीं मेरे भाई, क्या कर रहा है तू? V क्या होगा? What is Vx? सर Vx तो ये U cos theta I cap ही होगा. Plus what is Vy? U sin theta J cap minus J cap. That many meter per second. मुझे क्या चाहिए? Change in velocity. Change in velocity का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी तो ये है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है. तो u cos थीटा i cap प्लस u sin थीटा j cap माइनस j cap, ये सबट्रैक्ट करना है. तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस u cos थीटा i cap, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा. व्हाट इज आंसर फॉर दिस? तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? माइनस जी जे कैप. आया ना? प्लीज इनटू टाइम टी था, टी 1 सेकेंड है, टी 1 सेकेंड है, यानी आंसर तुम्हारा मीटर पर सेकेंड नहीं है. लेकिन क्या तुम्हें वेक्टर फॉर्म में पूछा है या मैग्नीट्यूड पूछा था? मैग्नेटिक। So what is magnitude of change in velocity? Is simply g meter per second. Answer is 10 meter per second. देखा पीयू कितनी सही थी. Students, are you getting it? All the students from Kharghar, Veer, what about you? Getting it? यस सर। फ्रेंड्स ये हम लोग ने किया है यार, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, क्यों नहीं तुम लोग क्लिक करते हो तुरंत? तो पीयू ने कैसे क्लिक कर दिया? पीयू को नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा पूरा पूरा काइनेमैटिक्स 1 और 2 के सारे क्वेश्चन, अभी उसमें से कुछ भी मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ऑफलाइन में, और उसका एक रिकॉर्डिंग सबको भेजूंगा मैं खारगर स्टूडेंट्स को. ओके पीयू? Yes, sir, surely. नेहा नेहा बोल रही हाँ सर भेजो. That's because see students, ये बहुत ही ये इनिशियल है. 1 सेकंड के बाद में वो कुछ जर्नी कवर करेगा, तो 1 सेकंड के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. लेकिन सिंस मोशन प्रोजेक्टाइल है स्टूडेंट्स, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो हमेशा 0 होगा, तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा ना. तो ux तो कांस्टेंट, लेकिन vy चेंज हो जाएगा. आफ्टर टाइम टी द बॉडी गेन सम पोजीशन आल्सो, सम हाइट आल्सो. तो हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, बस ये फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी यानी क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा. इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों का एडिशन हुआ. चेंज पूछा है, चेंज में मुझे आंसर ही आया. और स्टूडेंट्स यहाँ पे टी 1 सेकंड था, ये देखो ना 1 सेकंड था. यानी स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये तुमने जी लिखा है, लेकिन कोई बोलेगा सर यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए. नहीं, ये जी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. और ये जो 1 है ना, वो 1 सेकंड. सेकंड एंड सेकंड विल गेट, तभी जाके ये यूनिट है. समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, क्या मैं इसको अभी इरेज कर सकता हूँ? 2 सेकंड। Okay. Come on, Theo. Go with the next one. Third one. Those are with finish the second one. Go to the third question. Seconds are done. 2 seconds are done. समझ में नहीं आ रहा है क्यों? नेहा, what do you mean to say? No, my dear, there are 3 problems. 124 पे third problem भी दिया है ना डायग्राम में. अच्छा, Izar said it to wait for 2 seconds. Yes, Piyu. Piyu has raised hand. बोलो Piyu. सर लिख कर हो गया। अच्छा, लिख कर हो गया. इम्पल्स क्या होता है? हाँ, इम्पल्स क्या होता है? पिंपल फोर्स पिंपल तो इनटू टाइम।
पिंपल तो मुंह पे आता है, पिंपल। सर इम्पल्स। पिंपल ना, पीयू पिंपल बोली कि क्या बोली? व्हाट यू सेड पीयू? Sir, I said what is an impulse? अरे तो इतना धीरे से बोलते हो पता नहीं चलता। इम्पल्स, इम्पल्स इन फिजिक्स इज इट सिंपली वी कंसीडर चेंज इन मोमेंटम और इट्स अ सर मैक्सिमम एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अरे तुम लोगों फोर्स ने इन पढ़ा है टाइम ना, ना। मतलब लॉज लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, फोर्स इनटू टाइम है, न्यूटन सेकंड उसका हाँ यूनिट है, जे बार है उसका, उसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो जे बार होगा। पीओ डोंट डू लाइक दैट यार, यू आर स्केरिंग मी। लॉज ऑफ मोशन में किया है ना पीओ? नॉक नॉक, Yes, sir. पीओ आर यू देयर? नॉक नॉक। Yes, sir. Yes, sir. सुना ही नहीं रहे, देखो वापस सुना ही नहीं दे रहे। एक तो अपने में ही बोलती है, अपने में ही Sir, I'm खेलती है। speaking. You can't hear me. Tell your mama to speak. Call your mom, I'll speak to her. I'll tell her करके कि how loud your daughter is. वैसे तो इतना जोर से चिल्लाती है क्लासरूम में, स्टूडेंट्स तो देखना चाहिए, जोर से चिल्लाती है सर। स्टूडेंट्स ये जो इम्पल्स है, you have learned it in laws of motion, students. It is that maximum force which acts for a very short interval of time, students. It's that. Are you getting it? So do take care. We're speaking about concept related to impulse. Maximum force acting for a short interval of time. So unit is Newton second. Now, can anybody get the answer for this, students? Given you that a ball of mass 1 kilogram. Students, I'll just draw the diagram. The third question. सर थर्ड करना है सेकंड? Second हो गया ना मेरे? Oh, very Third. sorry. Oh, नहीं, second करना है। सर Second आपने किया थर्ड नहीं। बोला ना अभी। चलो थर्ड कर लो बस, तुम जी लो अपनी He जिंदगी। means to say कि नहीं line जी by लो अपनी, line. नो जी लो अपनी जिंदगी, बस अपनी जिंदगी जी लो। Let us go for the third one. A ball of mass 1 kilogram is attached to an inextensible string. Students, एक 1 kilogram ball है and it is attached to an inextensible string. तो ये जो तुम्हारा string है, ये ऐसे लेके students उसको U shape में लेके यहाँ पे दे दिया है। ये ball है students। यहाँ से मैं इस ball को release करूंगा, तो जैसे ये ball release होगा तो it will be falling downward students. Agree? तो अगर इसी का मैं diagram वापस draw करूँ students, तो क्या होगा? ये point यहाँ पे है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो मेरा डायग्राम पूरा ऐसा हो जाएगा और ये मास यहाँ पे आ जाएगा, है ना? जैसे इसको मैं रिलीज कर दूंगा तो इट्स गोइंग टू हैव अ फॉल। तो ये डायग्राम होगा। मास इज गिवन टू हाउ मच? 1 किलोग्राम। So when you read the question given to you, students, a ball of mass and g is given to us. Gravitational acceleration is how much? 10 meters per second square, students. It's given to a ball of mass 1 kilogram is attached to an inextensible string. That means it's a highly elastic string. It doesn't get extended, students. Okay, the ball is released from the position as shown in the figure. Find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string. Impulse means what? The change in momentum or the force into time after the string becomes taut. The word taut. So the word taut stands for stretched tightly. Stretched. यानी जैसे तुम रिलीज करोगे अब ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेच टाइटली होगी। This much is 1 meter. ये हुआ तुम्हारा पोजीशन, है ना? यानी सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आएगा जैसे तुम छोड़ोगे, है ना? Sir, let us do. अरे क्या बात है पियो, सही है यहाँ, सही है पियो।
स्टूडेंट्स मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो। Shall I give you options, students? Students? Students, option Yes, 2. sir. हाँ, sir. Okay, 5.4 Newton second. Option B, 6.4 Newton second. Option B, 7.4 Newton second. And option D, 6 Newton second. Chalo. Now, who's the most intelligent student of the class? अरे बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों एब्सेंट है पर्पल हाउस में से? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये चैप्टर तुम्हारा हो रहा है क्या ऑफलाइन? नहीं, सर रोटेशनल मोड से चालू कर। हाँ सर. अच्छा, what about Kharghar students? Is this chapter happening over there in Kharghar, system of particles? No sir. नो सर। Rotational mechanics. Then why there are just 13 students right now? What is the strength of this purple house? 35 to Sir, 35. 30. Sir, I don't 40. मतलब यूजुअली तो सर 25 तक आ ही जाते हैं। लेकिन तो फिर इतने कम स्टूडेंट्स क्यों है? बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए? So maybe they must be having offline lectures. अरे ये तो बुरी बात है। हाँ सर, आपके लास्ट लेक्चर के वक्त भी हमारा था ऑफलाइन। पर ये इस बार तो किसी का नहीं है ना। पता नहीं, रॉकेट वाला पार्ट, इसके लिए मैं वही सोच रहा हूँ मेरा नोट्स का है, अभी अच्छा, याद आया। रॉकेट वाला नोट्स है ही नहीं तेरे पास ना? हाँ, तो वही सोच रहा था क्यों नहीं है, तो अभी याद आया। यस पीयू, कम ऑन आंसर, बोलो Sir, I कैसे करोगे? messaged you. फास्ट पीयू। Hello, hello, hello. Sir, can you hear my voice? I'm not able to hear you. Can you be loud and clear so that other students can also hear you? Don't speak to yourself or to your mom. Speak to everybody. Sir, my mic is just in front of me and I'm So take the speaking. mic very close into your mouth or keep it into your mouth and then speak. So can you hear me now? No, still louder. बोलो कैसे करोगे? Sir, we will use that formula. Root GH. एक second please. Root GH. ये कहाँ से आया? ये कहाँ से तुमने खुद के निकाला? Sir, if that ball is like वैसे bend है, अगर उसको 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 अगर if we will leave it freely तो वो पूरा 1 meter plus 1 meter 2 meter हो जाएगा ना। क्या किया? इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा? वो ऊपर हो जाएगा ना? So it will be 2 meter the length. ओके, यानी अगर स्ट्रिंग को स्ट्रेच टाइटली होना चाहिए तो व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टेंस कवर्ड? The distance covered by the ball will be equal to how much? 2 meter from the side. है ना स्टूडेंट्स? What she's saying is absolutely correct. यहाँ पे अगर तुम स्ट्रिंग को हाथ लगाओ तो it's slackened, it's not stretched tightly. लेकिन जैसे तुमने छोड़ दिया तो पहले तो यहाँ से यहाँ पे वो एक 1 मीटर का जर्नी कवर करेगा बॉल, फिर यहाँ से यहाँ पे एक 1 मीटर का जर्नी कवर करेगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा? यहाँ से यहाँ पे ये 2 मीटर हो जाएगा। यानी तुमने बॉल को यहाँ से रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। टॉट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अगर क्या पूछा? फाइंड द इम्पल्स, है ना? अभी इम्पल्स कैसे निकालोगे? जल्दी। Sir, mass into velocity.
Absolutely correct. Two-dimensional impulse is equal to mass into velocity. Which velocity? Final velocity. How do you find out the final velocity when the ball has been released from the earth till here? Students, तो कौन सा formula use करोगे? V square is equal to U square plus 2AS. Initial velocity 0 है. Acceleration होगा minus G. Displacement होगा minus H. तो V is equal to under root 2GH होगा. PU not GH. 2GH होगा. समझ में आया? हाँ हाँ Free fall का. So what is the velocity, students? So velocity over here will be equal to how much? Under root 2. G कितना होगा? 10. Height कितना है? This is the height which is the body has been released. So ये 2 हो जाएगा. Agreed? So root of 4 क्या होगा? 2 root 10. What is the value of root of 10? 3.2. Pio was very smart. उसने आंसर दे दिया है. Pio तुम्हें पता था ना? Root of 10 is 3.2. सर हाँ मैंने Pio? वैसे किया ही नहीं हाँ? सर मैंने वैसे किया ही नहीं तो तुम्हें आंसर 6.4 कैसे मिला? बताओ. बताओ. सर आई टेकन 2 आउटसाइड एंड देन हाँ तो रूट 10 तो 3 भी आता है, 6 भी आ हाँ सकता है. हाँ एक सेकंड वाह रे वाह, पियो मटके मार रही है. आई एम ओनली कंफ्यूज्ड वेट Okay, वेट so answer is 6.4. Okay, 6.4 meter per second is the velocity. मुझे चाहिए impulse. What is impulse? Mass into velocity. है ना? How much is the mass given to you? 1 kilogram. So it's 1 into 6.4. So what's my answer? 6.4 Newton second. Which option is that? B. Students, the value of root of 10 is actually 3.16. ये correct value है. 3.16 is root of 10, which is nearly equal to मैंने लिया है 3.2. समझ में आ रहा है students? Yes. Students, क्या ये question clear हुआ सबको? Yes. Can I erase this now? Students, erase कर दूं? सर मेरा लिख के है सर. क्या बोल रहे हो इज़हार? तुम लोग इतना सॉफ्टली क्यों बात करते हो यार? लेक्चर्स में तो इतना जोर जोर से बात करते हो. सर मैं बोला मेरा लिख के हो गया. Okay, erase कर दूं students? नेहा, खारगर students, Veer. Yes, sir. Yes sir. Okay, come on, give me the answer for the second one now. Come on, the most intelligent person of the class will be able to answer the second one. And whoever answer has to solve it, okay? It seems that Piyush has answered. Yes, Piyush, चलो बोलो, कैसे करोगे? सर आई एम डूइंग कुछ सुनाई नहीं दे रहा. सर आई हैव नॉट डन येट आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन Okay. Yes, anybody? Somebody? What exactly the question speaks about? Velocity of a particle of mass. This is the second question, students. The mass of the body is given to us 2 kilograms, students.
Velocity of a body of mass 2 kilograms varies with time, and it is given as, so velocity, which is the function of time. So it is given as 2t I cap plus 4j meter per second. Here t is in seconds. Find the impulse imparted to the particle. यानी मुझे j bar चाहिए, impulse. Students, impulse is represented by j and it's a vector quantity. Its unit is always Newton second. So find out the impulse imparted to the particle in time interval. Given to you time interval 0 seconds to time interval ये t1 दिया है, ये t2 दिया है. Initial to final. Anish Chavan. ये Anish Chavan कौन है भाई? 2 seconds, huh, students? Who's this Anish Chavan? Students, who's this Anish Purple Chavan? house student. अरे लेकिन पहले तो नहीं आया ये. हाँ भाई. सर था बट रोल नंबर के साथ. Sir, he was only speaking about Christ. He was speaking about what? सर वो क्राइस्ट के बारे में वही बोल रहा था. अरे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो ना. सर वो क्राइस्ट के बारे में वही बोल रहा था अनीश. I don't know what is. अच्छा, Chris. Oh, that guy, that boy. Okay. Yes. Anish Chavan, you entered without roll number. Fine. Okay, doesn't matter, Anish. Fine, Anish. Students, chalo, now find out impulse from time 0 seconds to 1 second. Can you find out the answer? Sorry, 0 seconds to 2 seconds. Students, what is impulse? Impulse is that maximum force which is acting on a body for a very short interval of time. Students, have they given a time interval from T1 to T2? Why not? Students, अगर मैंने time interval छोटा लिया, अगर मैंने time interval बहुत ही छोटा लिया, so what about the impulse is also very small for a given force applied on a body? To find out the total impulse, can I go for integration? Why not? Students? तो ये क्या हो जाएगा? J हो जाएगा. Agreed. ये जो time dt है, what exactly? This is from T1 to T2. It's only that I need to find out force. How do you find out force? So force is mass into acceleration. Agreed. Students, how do you find out acceleration? So acceleration is rate of change of velocity. Enough? हाँ सर. So differentiate velocity करो. So what is acceleration? So differentiating 2t I cap plus 4j cap by dt. So ये answer meter per second square में होगा. So what's the acceleration possessed by the body? So ये हो जाएगा 2 dt and dt will get cancelled. So 4 is a constant. So acceleration क्या होगा? 2I meter per second square. ये देखो ये acceleration हुआ. Can I find out now force? What exactly force will be equal to? How much is the mass of the body given to us? 2 into 2I. What's my answer? It's 4I Newton, students. Can I put this force back over here? So integration of 4I into dt from T1 to T2, students. Integration आ गया. So J, can I remove 4I constant? हाँ sir, ये तो constant है. Constant terms cannot be integrated. What is integration of dt will be t, initial time t1, final time t2. So what exactly impulse will be equal to 4I into bracket t2 minus t1. What is t2 minus t1? 2 minus 0. So what's my answer for impulse? The impulse, or the answer for impulse will be 8I Newton second, students. क्या ये clear हुआ? Yes sir. Yes, sir. फिर समझ में आया क्या किया है? Impulse पूछा है तो force into time. अगर suppose if I take a very short interval of time, then the impulse imparted also will be very small. We need to find out the total impulse for a time interval from 0 seconds to 2 seconds.
तो dt इंटीग्रेशन ऑफ dt तो तुम्हें पता था, लोअर अपर लिमिट। फोर्स कैसे निकालोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं दिया था लेकिन वेलोसिटी दिया था, तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया इन टर्म्स ऑफ इट and we got acceleration that I substituted back. Is it clear, students? हाँ सर। Yes, sir. Yes, कर दूँ अभी मैं इसको? Sir, 1 minute. Okay. Done, sir. Okay, students. Now we go for collision, students. Okay, listen carefully, students. When you speak about the term collision, students, okay, since collisions are two kinds of it. It can be collisions between two bodies where you have a head-on collision, students. एक होता है head-on collision और दूसरा होता है students spring collision. यानी यहाँ पे no physical contact, no physical contact between the objects. लेकिन यहाँ पे क्या होता है head-on collision में physical contact होता है students. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. एक हेड ऑन कोलिजन के अलावा दूसरा ऑलिक कोलिजन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन. कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन. यहाँ पे भी क्या होता है सर? देयर इज फिजिकल कांटेक्ट. क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट. लेकिन अब ये फर्क क्या है? व्हाट एक्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री? स्प्रिंग कोलिजन्स, हेड ऑन कोलिजन्स, ऑब्लिक कोलिजन्स. स्प्रिंग कोलिजन के अंदर क्या होगा मालूम है? स्प्रिंग कोलिजन में क्या होगा मालूम है? एट मैक्सिमम compression, students, at maximum compression क्या हुआ view? Why are you raising your hand? Yes, sir. Sir, in Why are you raising your hand? Sir, I'm saying. Sir, in module it is given head-on collision is same as oblique collision. Bus, you are correct. You I'm wrong. I'm very sorry. I'm very very sorry. Okay, I won't do such kind of mistakes again. Okay, PO. Students, come back. Spring collision के अंदर there is no physical contact, students. At maximum compression, students. यहाँ पे क्या होगा मालूम? Springs के अंदर क्या होगा students? या तो springs will compress maximum या spring will undergo maximum elongation. Students, यहाँ पे ध्यान में रखना, at maximum compression of the spring, students, the velocities of the two blocks, students, velocity of two blocks is same. यानी स्टूडेंट्स दो ब्लॉक जब ये स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट करोगे ना, तो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन
इनकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. Exactly same concept होगा when it goes for maximum expansion also. So this is called as maximum compression. ये है maximum compression. ये होगा maximum elongation. इसके बियॉन्ड तुम elongate नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. अगर बाई चांस तुमने इसके बियॉन्ड elongate करना शुरू कर दिया, अगर तुमने इसके बियॉन्ड elongate करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग अपना नेचर छोड़ देगी. It will not be more elastic. It will change into plastic. Yeah, it can break. तो यहाँ पे भी उनकी जो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स होगी ना, the velocity will remain constant. दोनों का वेलोसिटी सेम होगा स्टूडेंट्स. ये हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम प्रॉब्लम्स करते हो कौन से स्प्रिंग कोलिजन के अंदर. अभी स्प्रिंग कोलिजन के अंदर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट. इज देयर एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स? नो. लेकिन है, ये भी एक टाइप का कोलिजन है स्टूडेंट्स. ये कौन सा कोलिजन है सर? ये है हेड ऑन कोलिजन्स और ये है ऑब्लिक कोलिजन्स. यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हाँ सर है, यहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट हाँ सर है, लेकिन दोनों क्या एक ही है? पीयू बोल रही है एक ही है, शायद वो सही होगी, है ना? लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हेड ऑन कोलिजन में स्टूडेंट्स direction of velocities of the colliding body is always along the line of action of impulse. Students, head-on collision के अंदर direction of velocity of colliding bodies, of colliding body कहाँ पे होता है? is a long line of action, is a Sir, long line of action of impulse. जो यहाँ पे नहीं होगा, ये सर वो difference. ट्रांसलेशनल होगा ना? हाँ, और ये भी ट्रांसलेशन है, लेकिन ये ऑब्लिक है. इसका मतलब क्या मालूम है स्टूडेंट? ध्यान से सुनना. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मैंने ये एक बॉडी लिया है, ये दूसरा बॉडी लिया है स्टूडेंट्स, दोनों को मैंने सरफेस पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स. ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है. लेकिन अगर मैं u1 ग्रेटर देन u2 देता हूं तो होगा क्या सर? कुछ टाइम के बाद में दोनों बॉडीज इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? दोनों में इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हुआ लाइन ऑफ इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, ये हुआ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, is your line of impact, is the line of impulse, is it in the same direction of the colliding bodies? Yes. देखो क्या लिखा है? Direction of velocities of colliding bodies is along line of action of impulse. Of course उसी डायरेक्शन में है. जो यहाँ पे नहीं होगा. ये अभी समझ में आया? यस सर. अभी देखो इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसमें कैसे बताऊंगा? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. इसको तुम कैसे दिखाओगे स्टूडेंट्स? इसमें ऐसे दिखाएंगे हम लोग. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बॉडी है, एग्रीड, और ये दूसरा बॉडी है. ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, और ये हुआ इसका सरफेस. जैसे ये हिट होगा स्टूडेंट, जैसे ये हिट होगा, ओके, तो उनका डायग्राम क्या होगा सर? ऐसा डायग्राम आएगा. हिटिंग का डायग्राम बिल्कुल समर हो गई है ना? Now what's going to happen? This body is going to go in this direction. This body is going to go in this direction. है ना students? Look over here. In case of oblique collision, ये हुआ तुम्हारा line of impact. Students, other two bodies are going in the direction of line of impact. No.
यहाँ पे are the two bodies are going along the line of impact? Yes, that is the line of impulse. Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैंने ऊपर बताया, दूसरा बॉडी मैंने नीचे बताया, ऊपर नीचे बताया, तो हिट होने के बाद में they'll go and deviate at an angle with the horizontal. ये हुआ तुम्हारा कौन सा कोलिशन हुआ, ऑब्लिक कोलिशन. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट है, यहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट है. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All the students inside the group, I'm not only explaining PU, I'm explaining everybody. PU. Yes, sir. Understood. Enjoy. Okay. Students, अभी यहाँ पे देखो. Is it clear? Sir, Sir, but can please you don't explain that head-on collision again? हेड ऑन कोलिशन के अंदर नया हेड ऑन कोलिशन के अंदर क्या होता है मालूम है, दो बॉडीज एक ही लाइन में है स्टूडेंट्स, उनका सेंटर ऑफ मास भी डायरेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. तो जब भी दोनों बॉडीज कोलाइड होंगे तो उनका जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन विल बी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, and the direction of collision we consider of the two bodies will be in the direction of impulse, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी. अभी देखो ना, कोलिशन के बाद में स्टूडेंट्स, कोलिशन के बाद में ये बॉडी किस तरफ होगा, ये देखो स्टूडेंट्स, ये पहला वाला बॉडी, ये दूसरा वाला बॉडी. कोलिशन के बाद में क्या हो सकता है सर, कोलिशन के अंदर शायद 2 वाला आगे जाएगा, 1 वाला भी आगे जा सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दोनों एक डायरेक्शन में. लेकिन देखो ना, डायरेक्शन सेम ही जा रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. सर 2 वाला आगे जाएगा, पहला वाला पीछे भी जाएगा, लेकिन इट्स अलोंग द सेम पाथ, है ना. सर 2 वाला आगे चला जाएगा, पहला वाला स्टॉप भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी डायरेक्शन सेम पाथ है. या पहला और दूसरा दोनों साथ में होते हुए एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन सारे पॉसिबिलिटीज में देखो क्या स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन direction of velocity of the colliding bodies, direction of velocity of the colliding bodies we consider as what is exactly in the direction of impulse. लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये देखो आफ्टर कोलिशन इसकी वेलोसिटी इस तरफ गई, इसकी वेलोसिटी इस तरफ गई, और ये हुआ इम्पल्सिव कोलिशन. ये तुम्हारा इम्पल्स का इम्पैक्ट का ये है, उसका डायरेक्शन तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन क्या इनकी वेलोसिटी क्या सेम है? ये 1 and 2, do they have same velocities after collision? No. Is it going in the direction of impulse? No. नेहा क्लियर हुआ? Yes, sir. That means in this case, one of the colliding body goes in the direction different from the line of action of impulse. है ना? It goes in the direction away from the line of action of impulse. यहाँ पे सारे in the line of action of impulse. यहाँ पे दोनों केस में physical contact, यहाँ पे physical contact नहीं है, but at maximum compression and maximum elongation, the final velocities of the two bodies will be exactly same, but where? At maximum compression and maximum elongation at that time. क्या ये clear हुआ students? जी सर. Yes, sir. अभी दूसरी बात. Whenever you speak about collision, whether spring collisions, head-on collisions, oblique collisions, students, अगर ध्यान से सुनना students, if these 2 points you keep in mind, if linear momentum students, in all the cases linear momentum is conserved. Linear momentum is always conserved in this case, ये हमेशा होता है. लेकिन अगर kinetic energy is conserved, then such collisions are called as elastic collisions. Which collision? Since elastic collisions are those collisions in which kinetic energy is conserved, and that is applicable for head-on collision, oblique collision. जहां पे तुम्हारा kinetic energy conserve हो गया स्टूडेंट्स, वो कौन सा collision हुआ? Elastic collision. Linear momentum सब में conserved है स्टूडेंट्स, linear momentum सब में conserved है,
यहाँ पे भी कंसेप्ट है, यहाँ पे भी कंसेप्ट है। लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट का मतलब क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या होगा? वो क्या होगा? दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ तो वो कौन सा कोलिशन है? इलास्टिक। एंड इफ काइनेटिक एनर्जी is not conserved, then what kind of collision is this we call? Inelastic collision. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ Yes, स्टूडेंट्स। sir. तो तुम्हारे तीन टाइप के कोलिशन है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग कोलिशंस, हेड ऑन कोलिशंस, ऑब्लिक कोलिशंस। क्या तीनों केस में लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड? यस। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब सर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लेकिन कैन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व? अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया तो वो कोलिशन इलास्टिक कोलिशन बोला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यह है इसका मतलब। उसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल कंजर्व्ड है। लेकिन नॉन कंजर्वेशन में क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे देयर इज लॉस इन एनर्जी। जब भी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो यहाँ पे देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। If there is no loss of energy, such collisions are called to be elastic collision. If there is loss of energy, such collisions are called to be inelastic collisions. So now when somebody asks you what exactly happens in elastic collision, then your answer is in elastic collision, linear momentum is conserved as well as kinetic energy is also conserved. Is there any loss in kinetic energy in elastic collision? No. What happens in inelastic collision? Then in inelastic collision, students, your linear momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. There is loss in kinetic energy. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. This is a very important point which a student should keep in mind. Can I erase it? No. हाँ बोलो. Sir, loss of energy is happening in inelastic collision, right? हाँ. Okay. लो. और सर आपने वो लीनियर मोमेंटम के बाजू में क्या लिखा है ब्रैकेट में रेड में? मोमेंट Initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. उसको तो बोल. ओके ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट्स तुम लोग ने किया है ना लॉज ऑफ मोशन में? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. पीओ. Clear. हाँ नहीं हाँ किया. देखो सर लॉ. हाँ सर तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन. राइट. You just enjoy and calm. Very good. Okay, students. क्या मैं erase कर सकता हूँ इसको? नो सर नॉट एट ऑल Anita, are you getting it, Anita? Are you there, Anita? Yes, sir. Okay. What about Akshat? Arif? Getting it? Yes, sir. Aisha? Vishali? Yes, sir. Yes, sir. Nikhil? Rushika? Yes, sir. Rushika? Yes, sir. Okay. Veer, what about you, Veer? Yes, sir. Please, कुछ भी confusion हो तो पूछ के complete करना. Please don't take things further at like that only, because इसके भी questions अच्छे होंगे. This is actually a last part of your system of particles.
Yes, sir. Done. Thank you. Very good. You just enjoy. सर इस फ्राइडे हम लोग का 2 क्लास हाँ, किसका? हम लोग का सर हमारा सुबह में भी आपका है और फिर शाम में भी आपका है। अरे बाप रे, क्यों ऐसे, क्यों 2 क्लास क्यों Sir, रखा you है? are going to Khargal, Raj? अरे नहीं, सर पर्पल पर्पल हाउस। हाउस। अच्छा, oh, okay. यू टाइम टेबल खोलना होता है। Then I know Izhar, I'm better arranged than you, okay? ठीक है ठीक है। अबे I'm taking a place at Khargar only, shift हो रहा हूँ अभी यहाँ पे। हाँ सर हाँ रियली। सर हो जाओ हो जाओ। हाँ Sir, सर sir, हो जाओ please, सर। please, no, sir, no, please. Sir, tell सर हो them जाओ। it is all in their dreams. सर हमें भी ले चलो। ओके, तुम लोग भी आ जाना मेरे साथ में। सर पीयू को लेके मत आना। पीयू को लेके मत आना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अभी हम पहले स्प्रिंग कोलिशन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन ना। स्प्रिंग कोलिशन में होगा क्या स्टूडेंट्स? स्टैंड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग कोलिशंस, think as if there are two blocks. Students, two blocks are given to you. Both these blocks are placed on a horizontal surface by a spring. Okay, now this spring is highly elastic, students. Let us say that the two block students are having mass m1 and m2. Okay, iska mass m1 hai, iska mass m2 hai, students. Okay, now suppose if I say that this block is moving in the forward direction and this block is also moving in the forward direction. This has an initial velocity u1 and this has an initial velocity u2. Both of them moving on the surface, students. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या, u1 is greater than u2, तो अभी होगा क्या? Students, can you tell me what is going to happen after a certain interval of time? अगर u1 greater than u2 है तो क्या ऐसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी तो पहले ग्रेटर थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या ऐसे ये नजदीक की तरफ जाएगा और ये आगे की तरफ जा रहा है। At a certain instant क्या होगा? Students, at a certain instant क्या होगा? m1 will come very close to m2, है ना? हाँ स्टूडेंट्स, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना? Yes, sir. हाँ Students, are you getting it? u1 is greater than u2. Two blocks are moving on a horizontal plane, students. At the same time, m1 is moving towards m2 with a velocity u1 and u1 is greater. तो ये आगे की तरफ जाएगा तो कहना है ये हो जाएगा maximum compression. At maximum compression, students, at maximum compression, what about the velocities of the two bodies at maximum compression? The velocities of the two block will remain constant, है ना? Students, मुझे बताओ what is the initial momentum over here? Initial momentum का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? सर initial momentum का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? सर it's m1 u1 plus m2 u2, है ना? हाँ students? यस सर। What is initial kinetic energy? तुम्हारे सर half m1 u1 square, agreed, plus half m2 u2 square, है ना? When they are in motion. लेकिन after some time maximum compression होगा. यस So सर। at maximum compression, students, at maximum compression, अभी क्या होगा students? Can you tell me at maximum compression, students, what is the final momentum of the two bodies? Then your final momentum of the two bodies will be equal to what? Sir, आपने बोला था maximum compression दोनों का mass का velocity एक ही होगा, तो कहना है इसे m1 plus m2 into v लिखूंगा, आया ना? Yes, sir. हाँ स्टूडेंट्स, और उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट मैक्सिमम कंप्रेशन? सो उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर तो होगा, प्लस काइनेटिक के साथ में कहना है द टू आर गेटिंग कंप्रेस्ड, तो एक कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट इज प्लस हाफ kx square. What does this k stands for? Elastic constant. Yani students, what is the final energy possessed?
Students, what is the final energy possessed by the blocks at maximum compression? Then the answer will be half m1 plus m2 and velocity is v square. But due to the compression, it has elastic potential energy also, half kx. What does k stands for? Elastic constant. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर क्लियर होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी देखो, अभी मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद में क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यानी तो तुम लोग सर, यानी सर U1 की स्पीड कम होते जाएगी, है ना? U1 की स्पीड कम होते जाएगी और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। लेकिन आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा? आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा सर? आफ्टर कंप्रेशन ये M2 आगे भागेगा स्टूडेंट्स। अभी ये जो M2 है वो M1 से रिपल्शन शो करेगा। V2 की स्पीड होगी, इसकी V1 होगी एंड V2 विल बी ग्रेटर देन V1। हाँ या ना स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, Sir, it sir. means Yes, sir. repulsion, no? यस। एक कंप्रेशन हो जाता है, उसके बाद इतना कंप्रेशन होगा, फिर उसके बाद तुरंत ये आगे की तरफ भागना शुरू कर देगा, तो ये V2 विल बी ग्रेटर देन V1। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So now can you tell me what is the final kinetic energy after compression? After compression, तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ। Now if I happen to go for students, if I want to use law of conservation, students, if I want to use law of conservation of linear momentum, then law of conservation of linear momentum can be applicable for two cases. Students, law of conservation of linear momentum can be applicable for two cases. एक होगा at maximum compression and at after compression. मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, at maximum compression का फॉर्मूला क्या होगा? law of conservation of linear momentum. So what is initial momentum? ये आएगा फॉर्मूला, है ना? m1 u1 plus m2 u2, है ना? Agreed? Yes, sir. What is final momentum at maximum compression? ये आएगा फॉर्मूला, maximum compression, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे m1 plus m2 into v बार होगा। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. आफ्टर कंप्रेशन अगर मैं दूंगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला सर? m1 u1 plus m2 u2। यहाँ पे क्या होगा? m1 v1 plus m2 v2। क्या ये क्लियर हुआ आफ्टर कंप्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now if I ask you, what about kinetic energy? What is kinetic energy at maximum compression? So kinetic energy at maximum compression क्या होगा? या rather than kinetic energy, can I say total energy? Total energy at maximum compression. तो maximum compression क्या होगा? Initial क्या है? So initial ये है, kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. तो initial क्या है? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square. At maximum compression, what exactly the final energy? Half m1 plus m2 into v square plus half kx square. Is x your maximum compression? Yes. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी ने पूछा what exactly the law of conservation of energy we consider after compression, तो यहाँ पे क्या होगा? half m1 u1 square plus half m2 u2 square plus half m1 v1 square plus half m2 v2 square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir.
But generally, when you are trying to solve questions, students, all the questions are asked for maximum compression and maximum expansion. दोनों केस में तुम्हारा हाफ के x स्क्वायर आएगा आएगा और आएगा. क्या ये क्लियर हुआ? स्प्रिंग कोलिजन. यहाँ पे तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक कोलाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. यहाँ पे स्प्रिंग या तो ज्यादा कंप्रेस होगा या तो ज्यादा एक्सपांड होगा, ज्यादा एलोंगेट होगा. या कंप्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उस टाइम पे दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होगी. वैसे ही अगर दोनों ब्लॉक्स अवे जाते हैं एट मैक्सिमम एलोंगेशन, तभी उनकी वेलोसिटी सेम होगी. So when you're solving problems based on the spring collision, students, do keep in mind that linear momentum is conserved, even energy also is conserved. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Erase करो students अभी इसको. नहीं सर प्लीज. Okay. Can I erase students? Sir, I want to write that last 2-3 lines. Oh. That Sir, what is the last line? Could you read? Total energy at maximum compression. Got it, PU? Okay, sir. Sir, हाँ. सर अब ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो आपने बताया ना, एट मैक्स कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन एंड देन दैट टोटल एनर्जी वाला, वो आप एक बार खाली वापस समझा दोगे? जस्ट वन, मतलब वो लाइक हाँ शॉर्ट में ही बस। शॉर्ट यानी कैसे? शॉर्ट में कैसे बोलूं? शॉर्ट में तो मुझे वापस ये फॉर्मूला ही बोलना पड़ेगा। m1 v1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 into v, ये v, एंड आफ्टर कंप्रेशन उनकी वेलोसिटी ये होगी v1 v2, है ना? क्योंकि v2 बढ़ जाएगी। टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन में इनिशियल दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक के अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। यो करेक्ट, हाफ m1 m2 into v square plus half k x square, where k यहाँ पे is spring constant, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। k is spring constant, elastic constant, force constant, ये spring force के हिसाब से है। Yes sir, got it. And then also Okay. sir after, अच्छा एक second, okay okay, ये आफ्टर कंप्रेशन है, v है, हाँ हाँ sir, v1 v2 होगा। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. Students, page number 129 to the first question right now, everybody. Page number 129, students, first unsolved question right now. First unsolved question, students. Yes, anybody? So it's given to you that the two blocks of mass 3 kg and 6 kg respectively are placed on a smooth horizontal surface.
Okay, and they've given to you that is they are connected by a light spring of spring constant 200 Newton per meter. This means there are two blocks given to you. एक का mass है students it's 3 kilograms and the other mass is given to us 6 kilograms. Okay, students. And they've given you that the spring constant K is equal to 200 Newton meter inverse. Initially the springs is unstretched. Initially they are unstretched. Students, yani equilibrium condition mein. If you look at the diagram, students, they've given to you that the corresponding speeds are given to you, students. वहाँ पे. If you see over here, both of them are going in the opposite direction. Students, ये जो है 3 किलोग्राम वाला इस तरफ जा रहा है. Have a look at the diagram, students. Diagram next page पे दिया है. Hope that you are getting this. Page number 130 पे दिया है diagram, please. तो ये 1 मीटर पर सेकेंड है और ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड है. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्टूडेंट्स या मैक्सिमम एक्सपांशन होगा स्टूडेंट्स? Sir, Expansion. expansion. Yes. So once again I'll read the question, students. There are two blocks. Initially ये position पे अब ये stretch हो जाएगा spring, है ना? 3 kilograms, 6 kilograms based on a smooth horizontal surface है. Smooth है, horizontal है, यानी friction offer नहीं हो रहा है. They are connected by a light spring जिसका spring constant दिया हुआ है. इसको हम बोलते हैं spring constant, elastic constant, force constant दिया हुआ है students. Okay, they indicate the velocities are important. Find the maximum extension of the spring. Maximum extension यानी x पूछा है students of the spring. Now let's see who can get the answer. It's a very easy question, students. Maximum extension पूछा है, not maximum compression, maximum extension. But one point I made it very clear. Hope everybody remembers. At maximum compression and at maximum extension, the final velocities at that time, the velocities of the two blocks at that time, at that instant, is exactly the same. Yes, come on, anybody? Farhan, can you answer? Akshat, Anaita, Arif, Trying, sir. Neha, Yes, Rashika, sir. Veer. Come on, answer Neha. Rashika, Veer. Yes, anybody? Solve karo students. Can I solve it for you all? हाँ सर. Students, मुझे ये बताओ क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं फॉर्मूलाज बता चुका हूँ. मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के बारे में है. तुम्हें x पूछा है
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, डोंट यू गो फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? हाँ स्टूडेंट्स, तो कैन आई से m1 u1 plus m2 u2, है ना? What is the final momentum at maximum extension, maximum elongation? दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, तो m1 plus m2 into v आएगा ना। ये फाइनल मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes. तो स्टूडेंट्स टेंशन क्या ले रहे हो, मुझे ये बताओ। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जहाँ पे ये सारे वेक्टर नोटेशन में आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सारे वेक्टर नोटेशन में। देखो m1 कितना दिया सर, 3 किलोग्राम्स। u1 का डायरेक्शन क्या है सर, अगर मैं ये u1 लेता हूँ और ये u2 लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कैन आई टेक दिस इज -1? ये कितना होगा 2। इज इट गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस +2? m1 plus m2 यानी कितना होगा 3 + 6, एंड दैट इज v। सो कैन आई से दिस आंसर इज -3 + 4 is equal to 9. So what exactly my answer for velocity will be equal to 1/9 meter per second. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर हाँ आपने M2 6 क्यों लिया? हाँ सर आपने M2 2 लिया? एक मिनट। हाँ अरे सॉरी, m2 6 है ना, Yes, sir. वही सॉरी 6, तो मेरा वही सर। 6 तो 12 होगा, तो ये 9 होगा, तो आंसर इज 1। Since velocity is 1 meter per second, agreed? Yes. Yes, sir. everyone हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स ये मास 6 था, मैंने यहाँ पे 2 लिया था, ये 6 है। एग्रीड? हाँ या ना, बाद में बोलना मत कि नहीं हाँ समझ सर। में। Yes, sir. Yes, sir. सब बोला तो यानी था। ये क्या है? ये दोनों का वेलोसिटी। अभी देखो, यानी नेक्स्ट सिस्टम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, हमें पूछा मैक्सिमम, तो कैन आई यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हाई नॉट? And what is law of conservation of energy? सुन, जब भी हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे तभी हम वेक्टर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम एक्सटेंशन? हाफ m1 प्लस m2 into v स्क्वायर, v तुम्हें पता है, प्लस हाफ के x स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला? आ गया फॉर्मूला स्टूडेंट्स? आया ना? Yes. Yes, sir. अभी यहाँ पे क्या तुम साइन कन्वेंशन यूज करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मास दिया है? हाँ सर मास दिया है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे u1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पे m2 सर 6 आएगा, u2 2 आएगा, m1 प्लस m2 3 + 6 आएगा, v 1 आएगा, हाफ k 200 आएगा। कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ x? Yes. सारे क्वांटिटीज आर नोन टू एक्सेप्ट x। चलो सॉल्व करो एंड गेट द आंसर फॉर x। Students, hope you are getting it. Yes, sir. यस सर। It will answer for x.
Is students getting it? Answer for x कितना आ रहा है? हाँ students? 0.3. Pardon? 0.3. Very हाँ सर good. मेरे को भी 0.3 है. X आएगा 0.3 मीटर या x is equal to 30 सेंटीमीटर. यानी स्टूडेंट देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा 30 सेंटीमीटर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. देखिए क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? कैन आई इरेज इट? Yes, sir. Okay. The students, when you're solving questions, do take care about strings. Is that clear? Such questions can be asked about strings also, students. Now the next part, students, what is there is between collisions of two objects, students, and there is no spring force, spring relation, students. These are head-on collisions, students. It can be either oblique or head-on collisions, whether it's elastic or inelastic, students. वो वाले type के collisions के questions हैं, students. Okay, and many of you all have learned it in your laws of motion, students. एक simple मैं एक last derivation में बता देता हूँ, students. Law of conservation of linear momentum, students. For head-on collision के लिए क्या होता है? अगर तुम head-on collision के लिए लेते हो students, so let us say there is mass m1, okay, and mass m2. Both of them are moving in the same straight path, okay, with initial velocity u1, initial velocity u2, but u1 is greater than u2. After some time, what's going to happen? m1 and m2 के बीच में physical contact होगा. Let t be the time of impact, है ना? Time of impact, agreed. So can I say there is a force exerted on 2 by 1, force exerted on 2 by 1, so 2 इस तरफ जाएगा. What is force exerted on 2 by 1 will be equal to? Force is exerted on 2, so it will be mass of 2 into the acceleration possessed by 2. क्या ये clear हुआ? हाँ students, force is exerted on 2 by 1, so mass of 2 into acceleration of 2. हाँ students? Yes sir. Yes, sir. ये हुआ तुम्हारा action. इसको हम बोल सकते हैं action force exerted 2 by 1. Can I say there is a force exerted on 1 by 2 also? Again, there is a force exerted on 2 by 1 at the time of impact, and there is a force exerted on 1 by 2 also. ये क्या होगा? Reaction force होगा. आया ना? है ना? Force is exerted on 1 by 2. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? m1 into its acceleration. लेकिन can I say students the two forces are equal in magnitude and opposite in direction. क्या ये clear हुआ? ये है action और ये है reaction. Can I say they are equal in magnitude and opposite in direction? Negative Yes, sign क्या sir. दिखाता है? They are in opposite Opposite direction. direction. ये तुमने कहाँ पे पढ़ा है? ये तुमने laws of motion में पढ़ा होगा ना students? हाँ students, यहीं से तो तुम्हें law of conservation of linear momentum का formula आता है. अभी देखो force exerted on 2 by 1 यानी ये formula होगा sir m2a2 minus m1a1. ये होगा m2 into bracket what? v2 minus u2 upon time t. है ना? Acceleration is rate of change of velocity. यहाँ पे होगा माइनस, मैं m1 को बाहर निकाल दूंगा. ये क्या होगा? v1 minus u1 upon t. Students, is the time of impact same for both? Yes. The two bodies had same time of impact, so t gets cancelled. For the same time we consider at a given time. Now multiply. So this is m2v2 minus m2u2 is equal to plus into minus m1v1 plus m1u1. Rearrange the terms. Students, can I take this on the other side? देखो, तो m2v2 होगा plus m1v1 होगा. ये देखो, m1u1 आया और ये इस तरफ ले लो plus m2u2 हुआ. What is this? So this is called as final momentum of the two bodies after collision, and this is initial momentum of the bodies before collision. This is after and this is before. What does law of conservation of momentum says? In absence of any external force,
Students, there is no external force. No external force. The total momentum of the body remains constant or is conserved. This is called as law of conservation of linear momentum. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So law of conservation of linear momentum states that in absence of any external force, students, the total momentum of the system or the body remains constant or is conserved. So the final momentum of the two bodies after collision is equal to the total momentum, initial momentum of the body before collision. और जब भी तुम law of conservation of linear momentum use करते हो ना students, हम लोग ने spring में use किया, अभी भी हम use करेंगे. देखो मैंने final answer vector नहीं लिखा है. यानी students sign conventions ध्यान में रखना. एनर्जी का जब भी फॉर्मूला लोगे ना तभी वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम के टाइम पे प्लीज डू टेक केयर. अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस लेना है, क्योंकि ये सारे वेक्टर नोटेशंस में होगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ सर. Fine. So in the next lecture, students will be continuing further on. Okay. Thank you, Thank sir. you, Bye, sir. sir. Bye, sir.